Hello everyone, I am Mr. Sahu from Skill Development Institute, Bhubaneswar. Skill Development Institute is a mega skill campus established at Tarabai on a green, lush environment sprawling over 50 acres of the land. SDI is one of the biggest skilling academy in the nation, providing training on various industrial areas like welding, advanced welding, technician instrumentation, and and certain center of excellences have also signed the MOU with various courses they are also running. Now today, in this intro, I welcome you to the introductory session on the course named Technician Instrumentation. Now, Technician Instrumentation is affiliated to CGSE, and it is under NSDC in line with National Skill Mission of India, in line with National Skill Mission of India, and the QP code is CSQ0802. QP stands for Qualification Pack, and it is nothing but in general it is a syllabus that is going to be covered in the entire 6-month session of the course. Now, the minimum age that is required for undergoing this course is 18 years. And because industrial recruitment that are happening is at the age of 18. At the age of 8, minimum the age should be 18. And the minimum qualification that is needed for is diploma. तो एक बंदे को डिप्लोमा होना है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैकेट्रॉनिक्स में. सो अगर इन चारों चीज़ों में एक ट्रेनी डिप्लोमा किया है तो he is welcome to undergo the course of instrumentation. Now the student capacity should be 30. 30 is the minimum intake of the student that are needed to undergo in a full batch. Now about the course. The course includes certain important areas like studying the principle and operation of measuring instruments that are used in industries, configuration of automated systems in sensor technology, electro-pneumatics, electro-hydraulics, control system, and other automation domains. So these are the brief about the course. Like in today's world, we deal with sensors. Now sensors are the cream of the world. Without sensor, moving an inch in the world is difficult. So what is a sensor now? Sensors you might have seen in your day-to-day life also. We start with a TV remote. The TV remote is having IR sensors, infrared sensors, and that is making your TV to operate. If you want to change your channel, then you use your remote. That is having infrared sensors in that, one for transmitting and one for receiving the signal back from the TV. And similarly, if you are using your AC in the summer, then you need a remote. So remote is also, that AC remote is also having sensor. Now if you go to a mall in your day-to-day life, then you have proximity sensors attached to the doors of the mall. So when you make an entry, it automatically opens. So that is the principle of sensors. Nowadays, in agricultural system, smart sensor technologies are also used in form of IoT and all. So sensors, even if you drive a car, then you have parking sensor attached on the back of the car, indicating that some obstacles are there at the back of the car, and so that the driver जो ड्राइव कर रहा है उसको वो इमीडिएटली बंद करेगा जब वो फेस करेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको वो तो गाड़ी चलाते वक्त देख नहीं पाएगा क्या पीछे है, तो सेंसर्स वो उसको बोलेगा कि बॉस something is there in the back that will hit your car on the back and bang your car. So sensors are finding applications right from your day-to-day life. Now if you make your pavement to the industries, sensors are no less there also. They are in food industry. आपका यूज हो रहा है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स. सो फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है. मेडिकल, जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ही विल बी यूजिंग सेंसर्स, some sensors in form of
ड्रिलिंग मशीन्स में सेंसर्स रहेंगे, तो जो एक्सरे भी निकालते हो उसमें भी सेंसर्स रहेंगे, और आपका फूड इंडस्ट्रीज में सेंसर्स यूज हो रहा है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सेंसर्स यूज हो रहा है। तो विदाउट सेंसर नाउअडेज लाइफ इज सिंपली ए स्टैंड स्टिल। सो आपको सेंसर्स यूज करना है। जैसे आपका ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट हो रहा है, अभी पावर सेविंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउअडेज। पावर सेव करने के लिए आपको कुछ टेम्परेचर सेंसर्स जो एलडीआर है, तो उसको यूज करके आप लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हो। Now, similarly, as the sensors find application in almost all the industries, in all the day-to-day life, similarly, pneumatics and hydraulics is need of the hour. अभी क्या है, आप जब जेसीबी मशीन्स देखते हो या स्टील इंडस्ट्रीज देखते हो, कन्वेयर बेल्ट्स देखते हो, स्मेल्टर प्लांट देख रहे हो, वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज कराया जाता है, जो प्रिंसिपल्स यूज कराया जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स, एंड कंट्रोल सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड। नाउ ऑटोमेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन यानी जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, स्मार्ट आईओटी, smart sensors. So all the smart sensors, IoT, they all use automation domains. And automation domains में आपको याद होगा microprocessors, microcontrollers, then आपका PLC. These all are used in automation part. Now, the brief syllabus of our course curriculum. Our course curriculum, or QP, the syllabus, contains these 5 basic parts. जैसे कि just I was talking in my previous slide, you will be dealing with pneumatics and hydraulics. You will be dealing with electrical and electronic measuring and control equipments. You will be dealing with maintenance activities, which is very much essential in an industry, because आपका इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बन गया, आप सेंसर्स यूज करके कुछ प्रोडक्ट बना दिया या न्यूमेटिक्स यूज करके कुछ बना दिया, बट इफ मेंटेनेंस इज नॉट देयर, जैसे कि आपका मेंटेनेंस बहुत तरह की होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस आप नहीं फॉलो करोगे तो दैट सिस्टम विल बी ऑफ नो यूज। सो आपको मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना है, तो उसके ऊपर भी हम कवर करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हेल्थ अच्छा रखना है। और सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हो, ऊपर देख के जा रहे हो, नीचे कील है। अभी nowadays people are moving with a mobile in their hand, and they are typing something and they don't find a gadha is there just in front of them, and they simply fall in that. So that is safety one should take care in industries with while dealing with the machines. So machines के ऊपर आप जब काम कर रहे हो तो आपका कुछ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करना है। जैसे आपको मशीन में कितना वोल्टेज आना है, और मशीन आपका कितना करंट ड्रॉ करेगा, उसमें जो कंपोनेंट्स है उसको आप कैसे यूज करोगे, तो क्या पहनना है लैब में, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। एसओपी बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर आप डिजीज हो, आपको कुछ डिजीज है, तो आप इंडस्ट्री नहीं जा पाओगे, तो उसको आपको सेहत अच्छा रखना है, अच्छा बैलेंस डाइट लेना है। और सेफ्टी इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्रीज, इवन इन योर डे टू लाइफ। देन वर्किंग इफेक्टिवली विथ अदर्स, आपको एक टीम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे मिलजुल के काम करना है, वो भी एक सेशन में हम वो भी डील करते हैं, आपको बताएंगे। वर्क आपको कॉलीग के साथ कैसे काम करना है, आपको टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है, आपको कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना है, सुपरवाइजर का ऑर्डर्स कैसे पालना है, सब हम इसको वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स पे आप थोड़ा हम उसको उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। सो आपका जो कोर्स करिकुलम है, ब्रॉडली इट हैज न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, health and safety, working effectively with others. Now I'm moving for the next slide.
So this electronic part is the part is fundamentals of hydraulics and pneumatics. Here, as I was just telling you about pneumatics and hydraulics, कैसे आपको industries में बहुत use होता है, और बिना pneumatics and बिना hydraulics आपका almost 50% of the industries नहीं चलेगा. तो उस पे अब न्यूमेटिक्स में क्या पढ़ाते हैं? न्यूमेटिक्स में आपका न्यूमेटिक कंपोनेंट्स पढ़ाते हैं. न्यूमेटिक्स कंपोनेंट्स क्या क्या है? जैसे कि आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स है, डबल एक्टिंग सिलेंडर्स है, और जो है आपका वाल्व्स है, सब उसके ब्रीफ कवर करते हैं. और उस पे फ्लूइड पावर कैसे हम यूज करेंगे? तो फॉर यूजिंग फ्लूइड पावर वी नीड कंप्रेसर्स. सो थ्रू कंप्रेसर्स वी use the fluid power to actuate means to actuate the pneumatics and hydraulic components. We need actuators are SACs, that is single acting cylinder, double acting cylinders, and many other loads are also there, which we will be discussing in our next classes, sorry. So आपका hydraulic cylinders and actuators भी पढ़ाते हैं इसमें. Then I will go for the next slide, that is this is the maintenance part. As I was just telling before, maintenance आपको कैसे करना है, जॉब कार्ड्स कैसे बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे लेते हैं, और ऑपरेटर मैनुअल जो SOP आपका वो कैसे फॉलो करना है, सेफ्टी ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कैसे करना है, ये सब हम इस मेंटेनेंस एक्टिविटीज के थ्रू आपको कवर करते हैं. And we just brief you also in the 6 months of the course. We just brief you about PLC. We talk about PLC, then what are the architecture of PLC, what are the different types of inputs and outputs, then analog, what are the analog input output, programming basis, NONC contacts, then few about digital logic we cover through Boolean gates and simplification of various Boolean functions, then programming functional blocks. So we covered these basics of automation also. जैसे आपको इंडस्ट्रीज में PLC के ऊपर भी जो काम होगा इंडस्ट्रीज में, तो PLC के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हम आपको इस ट्रेनिंग में देते हैं. Then this is the last part. This is the penultimate part of our course curriculum. That is working effectively with others. तो आपको कैसे आपका एटिक्वेट रखना है, जब आप किसी से बात कर रहे हो कैसे एटिक्वेट रखना है, सुपरवाइजर को कैसे सुनना है, आपका सॉफ्ट स्किल कैसा, आपको सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं. टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो भी सिखाते हैं. सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो सिखाते हैं. और वर्क प्लेस पे आपका व्यवहार कैसे होना है कॉलीग के साथ वो भी सिखाते हैं. Now I will talk about the certificate that you get, which is very important, and this is being done from external agencies like NSDC, which is the main skill mission which has been developed as per the National Skill Mission of India. And this is the course certificate that you get after the end of 6 months. That is, this is just a sample one which I am been showing you here. So this is a certificate that you get after the assessment which is being conducted by the National Skill Development Corporation through external agencies. So the important part now is after completion of this course, where a trainee can get a job. So the job that they will get is in chemical plants, manufacturing plants, petroleum refineries, canneries, food processing plants, and after the end of the course, as a technician,
A trainee should know how to calibrating a measuring equipment, how to install, repairing, and inspecting manufacturing equipment defects, and in general, the maintenance, how it can be done with sophisticated manner. So this is the course relevance in industry, and as a technician instrumentation, what one should know after the completion of the course. Now the vital part, that is placement. So these are a variety of company that we have put here. Many more are in line, and many more we have missed out also. So these are the companies that that students get into after cracking the interview conducted by the multinationals and various other top ranked companies. Now, to get in admission, to get an enrollment, to get a seat in SDI Bhubaneswar, and to get more insight, you need to visit www.sdibhubaneswar.co.in/SDI/course information/34. Thank you.